चार्ट दिख रहे नहीं क्या? चार्ट ठीक है. ठीक है मयूर, थैंक यू सो मच. चेक. हेलो. यस. सेक्शन 27. अरे ऐसे ही पूछा, चेक कर रहा था. ठीक है. आज दोनों का भी चेकिंग हो गया. हाँ, सेक्शन का भी, माइक का भी. ठीक है ना मयूर? सब ट्रेडिशनल बन गया एकदम. Why did you miss it? And how can you miss it? चलो स्टार्ट करेंगे बेटा. सॉरी, व्हाट वाज दैट? कुछ तो बोले आप. Yes, very good morning, my dear friends. Say good morning. Wonderful, fantastic to see you all on an amazing day. By the way, wish you all a happy Ganesh Chaturthi, and I wholeheartedly wish that Lord Ganesh will bless all his blessings upon you guys and ensure that you guys will successfully complete your CA Inter in the same manner how successfully you have completed your foundation. And foundation, if you have struggled a little bit and taken 1-2 attempts, I wholeheartedly wish that Inter you will not struggle at all and complete in the first attempt itself. With great amount of positivity, you will enter CA final. That's very important, because at CA Inter level, if you enter with that strong motivation and strong mindset, final level preparation becomes more easy. And moreover, final is one such level where you actually get that 1.5 year cushion and gap will come. See, because what happens is, once your Inter is done, how many years gap you have for final exam? Almost close to about 2.5 years. तो एक साल तो आप कुछ करेंगे नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज वो एक फर्स्ट 1 year आफ्टर पासिंग CA Inter एक्चुअली आप कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज आप कुछ करेंगे तो भी कुछ याद नहीं रहता एग्जाम को. You're getting my points? So basically, you don't prefer studying in that first 1 year after completing your CA Inter. So you basically get lot of time with you guys and a great amount of cushion for you to relax. So now is the real time of this 1 year where you take the best effort and complete your Inter with great amount of positivity. Then finally, you'll have some great time, guys. Great time, and you yourself will feel so happy. Final student. क्या समझा? That feeling will come. फाउंडेशन पास होने के इंटर में वो फीलिंग आता नहीं है. फाउंडेशन होने के बाद इंटर में हाँ ठीक है, इंटर है, दैट फीलिंग ओनली. बट एक बार जब फाइनल आएंगे ना, दैट फील इज डिफरेंट. द फील इज सो डिफरेंट बिकॉज इट इज जस्ट 1 step अवे. अभी कैसा दिमाग बोल रहा है, ठीक है इंटर पास होने का फाइनल भी तो है, बट एक बार जब फाइनल पास हो गए तो दिमाग, मतलब एक बार जब इंटर पास हो फाइनल में आ गए, इट्स वेरी क्लियर दैट यू आर जस्ट 1 step अवे. दैट 1 step डन, द 2 letters for lifetime. The 2 letters for lifetime. I feel so happy that today I've got 5 letters with me of CA and CMA. Both degrees I've done. And let me honestly tell you, I never had a choice to decide my name. I never had a choice to decide my surname. But I had a choice only to decide some letters before my surname, which I have chosen and I have done it. बराबर है ना सर? आपका नाम के पास आपको ऑप्शन था. आपने जब बचपन में बोले क्या अनिता सुनीता ये लगा वो लगा वो सब बोले, क्या ऑप्शन था? क्या आपने कभी सोचा क्या अंबानी के घर पे आना है, टाटा के घर पे आना है, ए टपरी के घर पे आना है? ऐसा कुछ सोचे तो नहीं ना. So we never have a choice. We are so blessed. Whatever parents we have, they are lovely parents what we have got. Correct, my dear friends? So that great family what we are staying with. So we have got an option to get few letters for our name for lifetime that will carry. For lifetime, I'll be called as Shiva Teja till the time I'm there. जाने के बाद भी वही बोलेंगे प्रिंट में. अरे बराबर नहीं यार. Everywhere that is a name. शादी के कार्ड में मैं लिखाया, मजाक नहीं करो, सच में लिखाया मैं. हाँ सच में लिखा है मैं, CA शिवा तेजा ब्रैकेट में CA CM में. अरे लिखा है ना यार, मालूम पड़ना ना यार. नॉट फॉर मी बट लड़की वाले के साइड पे सबको मालूम पड़ना है ना कि लड़की CA से शादी कर रही है. अरे सर CA बनने के बाद दिखाना तो पड़ता है यार. मतलब जी आफ्टर आई फिनिश माई CA, कितना 4-5 साल के अंदर मेरा शादी हो चुका है. तो आई मीन ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज, वंस यू बिकम योर CA फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 years यू विल हैव दैट हैंगओवर. हैंगओवर मतलब वो क्या लेवल ऑफ हैंगओवर? अरे CA भाई, हम CA. अगर पहले कोई फंक्शन में जाते कोई पूछते भैया तू क्या कर रहे है, भैया पूछ मत, मैं आऊँगा
फंक्शन देखूंगा, खाना खाऊंगा, चले जाऊंगा, तू पूछ मत। अब वैसे ही है ना, तब जब अगर सीए बन गए ना, हम वेट करते भैया आना, पूछना मेरे को, पूछना मैं क्या कर रहा हूँ, पूछना भाई, मैं बोलता हूँ ना कि मेरा सीए हो गया, बराबर ना यार। ऑलमोस्ट 5 years वाज लाइक दैट, ऑलमोस्ट 5 years इट वाज टू बी लाइक हैंग ओवर, लाइक कम ऑन, सबको बोलना है सीए सीए सीए। 5 years के बाद वो इनबिल्ट हो गया, ठीक है हम सीए, हाँ ठीक है सीए, ठीक है, करेक्ट। नो, बिकॉज आफ्टर स्टेज ऑफ टाइम ओनली इट विल बी लाइक दैट, बराबर ना यार, यू मेक सेंस नो। अभी मैं वाइफ को हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलता हूँ शादी के इतने साल बाद भी, बट आई विल नॉट टेल हर हैप्पी रोज डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी हग डे, वो सब तो बोलूंगा नहीं ना यार, हो गया वो जमाना, हो गया, बच्चा भी है अभी, और क्या बोलेंगे, कितने दिन बोलेंगे वो रोज डे चॉकलेट डे। एनीवेज, यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, डन। माय होल हार्टेड विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट whatever effort you guys are taking, that will definitely reap into great results, and I wish that that will happen very soon. Thank you so much. चलो आगे बढ़ते। Thanks for your support for coming today all the way. So let's spend some good time and discuss some interesting questions today. Today I'll not teach too much of concept to you, just few concepts I'll tell, and we'll solve a lot of interesting questions. Clear, my dear friends? Actually रात में मैं देख रहा था क्या क्या questions है book में, and I was surprised to see that some questions were really really interesting, which you will enjoy a lot, which gives us good clarity on when is ROR, when is RNOR, when is NR, and I'm sure after yesterday's class we have got a great insight about how we can be confused and how we can be convinced. करेक्ट, माय डिफरेंस, दोनों का पॉसिबिलिटी है ना यार। और आप मुझे एक बात बोलो, बाय मिस्टेक इफ यू मेक वन ROR फेलो एज NR, गया पूरा टैक्स स्टेटमेंट। NR को बाय मिस्टेक ROR बोले, पूरा टैक्स स्टेटमेंट गया, मार्क्स भी गया, प्रैक्टिकली भी गया। एक तो मार्क्स जाएगा और प्रैक्टिकली भी उसको बंदे का टैक्सेशन गलत हो चुका है, तो बराबर। एवरीबॉडी श्योर? फैंटास्टिक। चलो बेटा एक 5 मिनट हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद ही हम चालू करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स रिवाइज रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट। चलो बेटा इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक? सेक्शन 6166 अभी तक तो हम इंडिविजुअल के अलावा किसी का पढ़े ही नहीं, बाकी लोगों का कुछ भी टाइम में लगता है सर, बाकी सब लोगों का मिलकर 5-10 मिनट में हो जाता है पूरा। द रीजन बिकॉज देयर इज नथिंग देयर, but here only we are talking about coming going, Indian citizen, foreign citizen, that citizen, this citizen, person of Indian origin. Correct my dear friends? चलो what is section 61? Basic condition. बोलो बेटा कितने conditions? 2 basic conditions are there. What are 2 basic conditions? Number 1, he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Correct my dear friends? But I told you that there are 3 special cases. बराबर है बेटा? पहला स्पेशल केस क्या है बेटा बोलो? मत बोलो यार ऐसा, पर्सन वर्ड्स चेंज मत करो यार प्लीज, मीनिंग विल चेंज। व्हाट इज दैट वर्ड? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है, इंडियन सिटीजन मिस करे तो कॉन्सेप्ट खत्म, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मिस करे तो कॉन्सेप्ट खत्म, फॉर एम्प्लॉयमेंट मिस करे तो कॉन्सेप्ट खत्म। नो वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड। कम ऑन, व्हाट इज फर्स्ट वन? इंडियन सिटीजन leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an Indian ship. Exactly. चलो लास्ट वन क्या है बेटा, थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। आई मीन फर्स्ट वन सेकंड वन का रेसिडेंट तभी बनेगा इफ इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। इफ इज सैटिस्फाई सेकंड कंडीशन, गॉन भैया, राम राम, तू नॉन रेसिडेंट बन के रहे बस। नॉन रेसिडेंट में देयर इज नथिंग कॉल्ड NROR, NR, NOR, ऐसा कुछ है क्या? वंस NR, दैट्स इट। एंड थर्ड स्पेशल केस क्या था बेटा बोलो? इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर ए विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। करेक्ट है बेटा? इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? दिस फेलो विल बिकम ए रेसिडेंट only if he stays in India for 182 days or more. Correct my dear friends? But if he stays in India for less than 182 days, but if he stays in India for 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year, we will still call him as a resident, but he will become a RNOR. And this story will apply only when his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakhs. बेटा बराबर है एवरीबॉडी? बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करें हम कल।
और थोड़ा स्पेशल केसेस भी देखते हैं आज. स्पेशल केस मतलब प्रॉब्लम्स. नया कुछ कौन स्पेशल केस है, स्पेशल केस कॉन्सेप्ट हो चुका है. क्लियर है बेटा. और एक लास्ट एक चीज पढ़ाया था आपको बेटा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A याद है. ये तो गवर्नमेंट का जबरदस्ती है, आप कुछ भी बोलो है तो है, कुछ भी नहीं कर सकते. अरे बराबर है यार. अब ऑटो वाला बोलता है मीटर पे चलूंगा नहीं, 40 रुपए दे मैं चलता हूँ. अब तो रूल बोलेगा उसके साथ कि मीटर लगा, वो बोलता है जा बाय 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 जाएगा. जब जरूरत है तो क्या करेंगे. इन द सेम वे व्हेन इन इंडिया यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू फॉलो द रूल. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. चलो क्या बोले, इसका कंडीशंस क्या है. 3 कंडीशंस आर देयर. परफेक्ट. फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, इंडियन सिटीजन. कंडीशन नंबर 2, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इज मोर देन 15 lakhs. ये लास्ट वाला है थोड़ा ठीक है. क्या है लास्ट वाला, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री. ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है. वो सीधा बोल रहे भैया तू कोई टैक्सेबल नहीं है तो इधर डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा. बट हम तेरे को ROR नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, RNOR. आप इतना इमोशनल मत हो जा सर ये टू मच हो गया ना यार बोल के. हम डिस्कस कर रहे थे कल, जब वो RNOR बन रहा है, इंडियन इनकम तो कैसे भी टैक्सेबल है. अगर NR है तभी इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है. तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा, वो फॉरेन इनकम, वो 2 केसेस में फर्क पड़ेगा. क्या है बेटा वो 2 केसेस, बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड wholly or partly from India, professional income which is set up in India, and all that story we discussed in section 5, scope of total income, where I told you that there are 2 types of income called Indian income and foreign income. Indian income is which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. If it's accrued and received both outside India, we'll call it as what income, foreign income. And if income is an Indian income, it is taxable for all. ROR, RNOR, NR. बराबर है बेटा. If income is foreign income, what will happen? ROR के लिए taxable है, RNOR के taxable only in 2 cases. बोलो बेटा 2 cases क्या है, business income which is controlled wholly or partly from India, professional income which is set up in. चलो, if it is partly controlled, how much part is taxable? याद है ना example? So there is nothing called partly controlled, partly taxable. If it is partly controlled, that means it is taxable. When I say it is taxable, that means everything is taxable. Correct, my dear friends? There is nothing called proportionate taxability as such. Are we clear? सबको समझ में आ रहा है बात? Everybody? चलो. ये 6 क्या है बेटा? रिवर्स करके बहुत दिन हो गया. बोलो. कित एडिशनल? भाई तो एक वर्ड चेंज कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार. एडिशनल कंडीशन. हाँ, कितने कंडीशन है? क्या क्या बेटा? He must be resident in India. Be in India नहीं है दोस्त. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years. Exactly. And क्या मैडम भूल गए आप? तो बोलो ना यार फिर. And he must be in India for a period of 730 days or more during last 10 years क्या है यार? He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the. कल हम इतना स्पेशल केसेस में खो गए कि एडिशनल कंडीशन रिवाइज ही नहीं करे. बोलो बेटा वापस बोलो. कितने कंडीशन है? 4, 3, 2. हाँ वेरी गुड. क्या है 2? पहला वाला. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of what? 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Clear है? बेटा बोलो. क्या है section 6.6? What is section 6.1? Basic condition. What is section 6 subsection 1A? Huh? What is section 4? Section 3. स्टूडेंट बोल रहा है सर ऐसे पीछे क्यों जा रहे हैं आप, क्या फर्क पड़ता है यार, ऐसा भी पूछो. कम ऑन. सेक्शन 234, 231, 224, 225A, 27, 29, 210. एवरेज रेट ऑफ टैक्स पढ़ा है बेटा मैंने. टैक्स डिवाइड बाय इनकम इनटू 100. 229C. MMR. सुपर. वेरी फास्ट. वेरी गुड.
सर ये पढ़े थे हम लोग यार, MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट, याद है ना यार, 42 पॉइंट कुछ आया था अपने को, 774 आया था, ठीक है। अरे हम लिखे थे वो आंसर फर्स्ट चैप्टर में, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74। Intentionally I gave 1 minute break so that you will turn the page and see and you will not forget now. अब next बोलो 224, हाँ 224 इनकम, हाँ तो वही बोला, मैं एक बार लुक दिया, हाँ मतलब तो कॉन्फिडेंट बोला है, हेलो इनकम भैया सर इनकम, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना यार। 231 जब गलत बोलते हो उतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। 234, 173 वेरी गुड, 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, 174B, 174A, क्या परसेंट कौन सा परसेंट, मैं आप या कौन, एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस। मैडम आप रिवाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल एक हफ्ता हो चुका है सब क्लासेस का, अभी आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा प्लीज। अब ये मत बोलो कि रोज क्लास आ रहे जा रहे, वैसा नहीं होता है, रिवाइज करना भी पड़ेगा। मैं करता हूँ, मैं जो करूंगा, बट आप खुद भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा पर्सनल, करेक्ट नो। इन लाइफ सम थिंग्स वी शुड ओनली डू, करेक्ट नो। बोलने के लिए अच्छा लगता है, आप खाए तो मेरा पेट भर जाता है, कुछ नहीं बढ़ता है, आदमी का पेट तभी बढ़ता है वो जब खुद खाएगा, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सर समझ गए, हाँ दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। बोलने के लिए डायलॉग बोलते हैं वो सब, आप खाओ पेट भरेगा, वो सब कुछ भी नहीं है, वो सब टाइम पास की डायलॉग है बस। इनिशियली व्हेन माय मैरिज गॉट फिक्स्ड, मी एंड माय वाइफ वेंट फॉर ए डिनर, ओके, वो that we were not married that time, we were actually doing that courtship period. So when we were in the courtship period, when we went to one restaurant, it was a big star hotel, 5-star hotel in Hyderabad. So there we ordered one plate Manchuria. That fellow gave only 6 pieces, सिर्फ 6 पीस दिया। Price of that dish is close to about 450 rupees, but that fellow gave only 6 pieces. If a person like me focuses properly, in 1 minute I'll finish it. But रेस्पेक्ट भी तो करना ना आदमी का यार। ए बोला वो बंदा 2-2 पीस दिया, 3 दिन तो देगा नहीं, पूरा प्लेट खत्म हो जाएगा, 2-2 पीस दे के वहाँ पे रखा है। वी एट 2 पीसेस, आफ्टर दैट 2 पीसेस वर लेफ्ट आउट। मैं बोला आप ले लो, शादी तब भी फिक्स हुआ ना यार, शादी तो हुआ नहीं ना यार, ऐसे बोलेंगे ना आप ले लो, नहीं नहीं जी आप ही ले लो कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं आप ले लो कोई बात नहीं, तो फिर नहीं नहीं आप ले लो कोई बात नहीं, आप खाए तो ठीक है, अच्छा लगता है हमको, अच्छा ठीक है ले ले, डाल रहे तू डाल रहे बस। फिर वापस बिरयानी मंगाया और मैं बोला बिरयानी खाना है क्या, या मैं खाए तो आपको अच्छा लगता है, नहीं 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 मुझे भी खाना है। सब फैंसी स्टेटमेंट ना बोलने के लिए बहुत मजा आता है। चलो बोलो आंसर बोलो, आप भी रिवाइज करना पड़ेगा आपको भी। चलो व्हाट इज सेक्शन 66? क्या बेटा, कितने बेटा? व्हाट फर्स्ट वन? ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया for 2 years out of 10 years preceding the previous year. सर आप ये चीज ध्यान में रख लो, आप जब ऑब्जर्व करेंगे ना, additional condition 66 is not talking about previous year. Additional condition always talks about prior to previous year. उसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है, हम उसको बोल रहे whether he is an ordinarily resident or not. Ordinarily means generally, usually. Ordinary नहीं है वो, ordinarily है। ये चीज तो आपको ऑलरेडी बोल चुका बहुत बार में। Correct, my dear friends? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Second, he must be in India. He must be in India भैया, resident in India नहीं है वो, फर्स्ट वाला resident है, सेकंड वाला be in India है, दोनों में बहुत फर्क है। करो सेकंड वाला क्या, he must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Perfect. बेटा फुली क्लियर है, सबको क्लैरिटी है इस पे? श्योर? कैन आई प्रोसीड? चलो लेट मी डिस्कस सम कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रेडी है सब लोग? चलो लेट मी टॉक अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर हुम सर?
This is given by section 6(2) and section 6(6). स्टूडेंट बोल रहा है 6(6) तो वही है ना सर, एडिशनल कंडीशन वही है। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर वहाँ पे 6(1) 6(6) था ना, हाँ यहाँ पे क्या है सर 6(2) 6(6) है। अच्छा मतलब आधा काम तो ऑलरेडी हो गया अपना। क्या है आधा काम? एडिशनल कंडीशन। तो पढ़ना क्या है अपने को, वो हो जाएगा 2 मिनट में। सुनो, फर्स्ट HUF। सो व्हाट इज HUF फुल फॉर्म? हिंदू अनडिवाइडेड, पता है ना, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड मिताक्षरा लॉ, दया भागवला, सुने क्या? ए चाइल्ड विल गेट बर्थ, child will get right in the property only after birth, a child in the mother's womb will get right even before the birth। ऐसा सब स्टोरी है, मतलब टैक्स में ऐसा पूछते नहीं है, बट लॉ का सिलेबस में था ना, नहीं था? ठीक है जो भी है, पास हो गया ना अभी। देखो HUF, I'll tell you the reason why I ignored it, because वो आपको वापस इंटर में नहीं आएगा, फाइनल में नहीं आएगा, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उसके साथ आपका। क्लियर है? चलो, 2 कैटेगरीज, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। एंड रेसिडेंट इज क्लासिफाइड इनटू ROR, and I'll not teach this concept because this is based on what condition? Satisfy both, you will become ROR, any one or none, you'll still call him as RNOR। बराबर है सर? और ROR को क्या टैक्सेबल है, RNOR को क्या टैक्सेबल है, NR को क्या टैक्सेबल है, वो चीज तो अपने को पता ही ऑलरेडी। बेटा बोलो बेटा। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू that this additional condition what we are talking about, this additional conditions need to be satisfied by head of the family known as कर्ता। कर्ता पता है ना, सुने नाम कर्ता? कर्ता is somebody who actually does the whole activity. It's a Sanskrit word, karta karma kriya they say. Basically that's the meaning of that word, karta karma kriya. What activity you do will actually come back to you, that's how they say. सर क्यों नहीं है सर? HUF है ना सर, बराबर है। HUF is definitely there, no doubt about it। सर फेमस कौन से फैमिली फेमस है HUF में? अरे बहुत सारे फैमिली है वैसे तो, नथिंग कॉल्ड व्हाट इज फेमस HUF, बट नहीं आप पूछ रहे, आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब कौन सा फैमिली इंडिया में बड़ा HUF ऐसा पूछ रहे क्या? अच्छा कंपनी में रिलायंस स्टार्ट है, HUF में कौन है? अच्छा दैट वे आई एम नॉट श्योर, उनका फैमिली का कोई रहेगा ऑब्वियसली। सी हर बंदा एक HUF बनाते हैं ना यार फैमिली के बाद, वन से हैव ए चाइल्ड दे कैन डेफिनेटली क्रिएट ए HUF। क्लियर नो? और HUF लोग बनाते हैं क्यों सर? लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, शिवा तेजा आल्सो हैज गॉट शिवा तेजा HUF। द रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल, आई गेट सम इनकम इन माय ओन नेम, I also get some income in HUF name, and for HUF I'm paying tax separately। HUF का limits separate है sir। If I get income beyond 10 lakhs, let me honestly tell you, my income is beyond 10 lakhs, so I have to pay 30% tax। I'm paying 30% tax also, slab rate that also I'm paying। Correct my dear friends? If I get extra 3 lakh income in my name, I have to pay 30% tax, but if my HUF will again have slab rate system। समझ रहे आप लोग? That is also one kind of tax planning what we do, because 10 लाख तक तो टैक्स 1,12,500 ही आएगा ना सर। 2.5 लाख तक तो 0 है, 2.5 से 5 लाख 12,500 है, 5 lakh to 1 lakh is 1 lakh, it is 1,12,500। Effectively if you see, you are just paying 11% tax। Up to 10 lakh you are only paying 11% tax, 11.25। so 1,12,500 is 11.25 is the average rate of tax, बराबर ना यार? So up to 10 lakh you are paying only 11.25% tax, no? तो very good tax saving only, no? इसलिए लोग HUF बनाते हैं और हर बंदा करता है। Everybody does this HUF because they want to save their taxes। No one, I mean, who is in India who says that I want to pay all the taxes, I am very genuine, पूरा का पूरा white money करते हैं, करेंगे सब करेंगे, but the whole point is if there is a tax planning option, will we miss it? Obviously will not miss it। So getting my point? Everybody? Straight simple answer my dear friends, that's how it is। Let me give a small 1-2 practical examples so that you get a clarity my dear friends। Let me take an example like this। Prashant sir is there?
or when you are group 2 faculty whom you will see very soon, you already seen in foundation also. Prashant sir classes, if you see, whatever classes he is taking, he is running the entire classes on his name only. But he also conduct test series classes. Next time when you see the pamphlet of the CA Gate test series, wherever he gives details of bank account details, you please check it is a HUF account. It's a HUF account. Correct, my dear friends? Do you think it is wrong? It's 100% right. 101% it is right. You're getting my point? Entire income, if you take in personal name, you have to end up paying 30% tax, no? If you take on HUF name, HUF is keep doing that activity, family is running that activity, there up to 10 lakhs, we'll pay average rate of 11.25%. Sir, barabar hai? Speak out everybody, all of us. Now let me give one more small example, sir. This office is actually owned by Expert Academy, okay? Let's say this is owned by Vinod Reddy sir. Vinod Reddy sir is owning this, what do you call this classroom, means he will charge something called depreciation. So speak out. If ma'am says, Vinod Reddy ma'am's wife says that, अरे property आप आपके नाम पे क्यों ले रहे, मेरे नाम पे भी ले लो ना, हर property आपके नाम पे लेते क्या? तो Reddy sir बोल रहे यार, आपके नाम पे लेने में कोई problem नहीं है. But if I take on my name, I will at least get something called depreciation. Income tax saving तो होता है ना यार? You're getting my point, no? Very soon I'll teach one concept. Few months back, I purchased one property in Hyderabad for which I've taken a housing loan. And I've taken a housing loan on joint name. My name and my wife's name. Because in house property, very soon next chapter will start. अब समझ गए next chapter क्या पढ़ने वाले हम लोग? Income from house property. There whatever interest we are paying on EMI, that will take deduction. उसका कुछ लिमिट है. And limit is separate for each owner. तो अब जॉइंट सर, अगर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सर, उसका 2 लाख का लिमिट है सर. अगर मेरा इंटरेस्ट 3 लाख है तो कितना डिडक्शन मिलता है? 2 लाख. मैंने क्या किया, दोनों के नाम पे हाफ ऑफ लोन कर दिया, प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम पे कर दिया. सो वट एवर हाउस आई हैव इन हैदराबाद, आई परचेज ऑन माई नेम एंड माई वाइफ नेम. इट्स ऑन जॉइंट नेम. दोनों खुद जॉइंट को ओनर्स है. टेक्निकली वी कॉल को ओनर्स. मी एंड माई वाइफ आर को ओनर्स. मी एंड माई वाइफ टेकन ए जॉइंट लोन. EMI हाफ शी इज पेइंग, हाफ आई एम पेइंग. दोनों के नाम पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है. अब इंटरेस्ट आ रहा है 1.5 लाख उसके नाम पे, 1.5 लाख मेरे नाम पे. कैन आई टेक माई 1.5 लाख डिडक्शन? कैन हर टेक हर 1.5 lakh डिडक्शन? Is it a tax planning? Is it wrong? That's what I'm saying. So whatever any one of us is doing, there's nothing wrong. It's a pure tax planning. That's it. You're getting my point, no? In the same way, HUF also will save slight amount of taxes. ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 10 लाख तक फायदा है. अगर HUF में 10 लाख क्रॉस हो चुका है, इंडिविजुअल में 10 लाख क्रॉस हो चुका है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया पैसे इंडिविजुअल में आए या पैसे HUF में आए. करेक्ट है ना यार? इधर भी आओ 30% लगता है, उधर भी आओ 30% ही लगना है. और सरचार्ज रेट भी उसमें सेम है, इसमें सेम है. सर इंडिविजुअल का HUF का सरचार्ज रेट भी सेम है ना सर? टैक्स रेट भी सेम है. सर बराबर है एवरीबडी? दैट्स इट. आर वी क्लियर? कैन आई प्रोसीड? चलो, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2. दैट इज व्हाट इज लेफ्ट आउट. Clear, my dear friends? With the help of 6.2, we will decide whether HUF is a resident or non-resident. Only one line concept, my dear friends. What they told in the law is, if the control and management, if what, sir? If the control and management is wholly or partly in India, if the control and management is wholly or partly in India, then we say that HUF is resident in India. If control and management is wholly outside India, then we say that HUF is non-resident. Non-resident is non-resident ho gaya. But once we say that control and management is wholly or partly in India, we say that HUF is a resident. And if HUF is a resident, then we look at something called additional condition, which who must satisfy? Karta must satisfy. And that the additional conditions are same. That is 2 out of 10 years, 730 days or more during the last 7 years. Sir, correct है सर? समझ में आ रहा है सर सबको? बेटा बोलो बेटा. What is the basic condition? Come on, हो गया concept. 6.2 HUF का. HUF. If the control and management is wholly or partly in India, then HUF is regarded as a resident. Now I'll ask you one question. Think properly and tell me. Yeah? Expert Academy is being basically run by 2 persons. Yeah? Head of the structure. Number 1, Vinod sir. Other one is Sushil sir. Correct, my dear friends? We all also work together. Nobody is an employee here. All the faculties, we all work as a professionals with
expert institute. We all work together as a family. Now the point what I'll ask you is, there is a manager known as Mr. Navnath who runs the entire management in the office in terms of writing the bills, collection, finance, checking everything, all the classrooms are fine or not, any issues are there, all that he will resolve. Correct, no? Now I have a question to you. Do you say control and management is with Mr. Navnath, or do you say control and management is with Vinod sir and Sushil sir? Control is with Sushil sir and Vinod sir, acha. Management is with Navnath sir, acha. Sushil sir, Vinod sir only. Technical terms I'll write, but a meaning समझो. Exam में ये words नहीं आए तो भी चलेगा. But you have to understand the meaning. There is something called de jure control. Other one is called de facto control. And whenever we are talking about something called control and management, we are not talking about day-to-day affairs. We are talking about the decision-making power. Mr. Navnath might run day-to-day management perfectly, but it does not have a decision-making power. That is there with Vinod sir and Sushil sir. So getting clarity? So where they are located, that is important. Correct, my dear friends? But sometimes some reverse case can happen. Let me give a small example. Boys, we guys know better. Whenever we want something at home, directly we don't talk to father. We always talk to mother. That route is what we always take. We'll never take this route. We'll go like this. From here, mother will go to father. Direct लेंगे तो बहुत बार उल्टा हो जाते हैं. Correct? No, आप लोगों का अलग हो सकता है, but girls might be different. Because पापा का परी है. वो अलग बात है. But boys, I'm sure आप लोग सब मम्मी का full close ना? Exactly. Simple सी बात. When I come to Pune to take classes, every day at least 3-4 times I'll talk to my mother. पापा को तो 2-3 दिन में एक बार, हाँ पापा कैसे हो, सब ठीक है क्या, पापा ये नाटक मत कर, फोन रख. Correct, my dear friends? See, we share a bond with them, but that bond is little different. Correct, my dear friends? Now what I'm trying to say is, generally, who is supposed to control? Father. But who actually controls the family? Correct, no? पापा भी कुछ बहुत बार डिसीजन लेते नहीं, बोलते मम्मी से पूछ के लेंगे. Sir, yes or no? Right. Okay, no problem. Let me tell this. When Congress was in power, we know Sonia Gandhi. Who was the Prime Minister when Congress was in power? Manmohan Singh. Who is supposed to control? Manmohan Singh. But who actually controlled? Sonia Gandhi. We know this. No doubt. And I don't hesitate to sell this also because that's very clear. But Manmohan Singh is an extraordinarily talented person. In fact, he is the person because of whom GST came also in India. I'm saying GST came in India because he is the person who brought service tax in India in 1994. Because service tax came in India, the idea of GST came in India. So the seats, watering, all was done by Manmohan Singh only. Extremely talented banda here. Not normal. In India has ever seen finance minister, one of the finest. Yashwant Sinha, Pranab Mukherjee, so many came, but Manmohan Singh talent is outstanding. वो पगड़ी के अंदर मतलब अलग ही लेवल का बंदा है वो. As a Prime Minister, he could not do much because of political reasons and all. But I hope you know that Prime Minister will also work as a Planning Commission Chairman. As a Planning Commission Chairman, he has done a lot. And a Finance Minister, super talented. Super talented. Amazing guy. Now, why I told you all the story is that there is something called de jure control and de facto control. De jure control means who is supposed to control. De jure is who is supposed to control. De facto means who actually controls. Income tax says, we are not concerned with de jure control. We are concerned with de facto control. किसको करना चाहिए उससे क्या लेना देना है भाई? कौन कर रहा है वो तो important है ना यार. So getting my points? Everybody? Classic exam महाराष्ट्र politics. बराबर ना? पेपर में किसका फोटो आना चाहिए सबसे पहले? हाँ सीएम का आता है किसका है पर? डेप्यूटी सीएम का. बस उतना ही बात है. बाकी चीजें छोड़ दो बट समझ गए ना आप लोग? That's how it is. कुछ भी नहीं कर सकते मतलब वो अलग ही सिस्टम है, अलग ही लेवल है वो. सर क्लियर हो गया बेटा? HUF डन. डन खत्म HUF. In case of Vinod sir and Sushil sir, what I was giving an example, Navnath sir might be managing a day-to-day affairs of the company, but who actually has got decision-making power is Vinod sir and Sushil sir.
So what is important? Vinod sir, Sushil sir, control and management only is important. Clear, no? Everybody? And see, ultimately what is important is the decision making power is what I'm trying to say. When I'm making you right also, that only I'll make you right. That where is the decision making power? Date, control and management, what line we'll write in the class is, control and management doesn't mean day-to-day affairs of the entity. Control and management refers to where the decision making power or the directing power or the seating power is situated. That line will write. Directing power, seating power, decision making power. Correct? Yeah, that is important, no? Decision making power is with them all, ultimately. You're getting my point, everybody? Chalo beta, done. Kadam karte. पहले साइड हेडिंग लिखो, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. ठीक है, सेक्शन नंबर लिखना बेटा. सेक्शन 6(2) एंड सेक्शन 6(6). Section 6(2) and section 6(6). Correct, my dear friends? नीचे फिर से लिखो बेटा, सेक्शन 6(2). ये लिखो मत, ये बाद में लिखते हैं. Below write again, section 6(2), underline. Already heading लिख दिया ना आप लोग. Resident status of HUF, section 6(2) and 6(6). नीचे फिर से लिखो section 6(2) and underline that. ठीक है बेटा? Done. हाँ, नीचे लिखो. As per section 6(2), as per section 6(2), as per section 6(2), as per section 6(2), come on. HUF shall be regarded as resident. HUF shall be regarded as resident. HUF shall be regarded as resident only if HUF shall be regarded as resident only if control and management HUF shall be regarded as resident only if control and management is wholly or partly in India. Wholly or partly in India. Guys, let me ask you one question. When I say wholly or partly in India, does partly mean 50-50? Even if it is 1% also, still we say it is in India. Law never told partly means 50-50. And even if 1% is there, still it becomes resident. Once resident, everything is taxable. Nothing called proportionate taxable. This concept already told you. Clear, no? Chalo, kya likhe aap log? Wholly or partly in India. Next, below you write. Next line you write. If the control and management is wholly outside India, if the control and management is wholly what, sir? Outside India, then HUF shall be regarded as क्या बेटा? Non-resident. HUF shall be regarded as non-resident. दोस्तों क्लियर है? एवरीबॉडी पक्का? नोट लिखो. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट refers to, okay, wait. Control and management does not refer to control and management
does not refer to day-to-day affairs of the HUF, does not refer to day-to-day affairs of HUF, does not refer to day-to-day affairs of HUF, but it refers to the place where, but it refers to the place where decision making power, decision making power, sir, use a slash, no, use slash, decision making power slash directing power, decision making power, directing power slash क्या बेटा, seating power. अच्छा क्लियर है? डिसीजन मेकिंग पावर, डायरेक्टिंग पावर और सीटिंग पावर इज सिचुएटेड. Decision making power, directing power or seating power is what, sir? Situated. That's it. I hope we are clear, everybody. Beta bolo clear hai? That's it. Note, and one more note, note 2. If HUF is resident, then HUF may be regarded as ROR. If HUF is resident, then HUF may be regarded as ROR if क्या बेटा, if karta satisfies, correct, no? If karta satisfies both the additional conditions given under section क्या section बेटा, 6.6. That's it. बेटा clear है? Just take this table, no, this diagram below and close it. बेटा clear है? Can I proceed?
So what is section 6.1? Basic conditions for individual. 6.2, basic condition for HUF. 6.6, additional condition, which is for individual as well as HUF. And HUF case, who has to satisfy that additional condition? Karta. Chalo. So can I proceed? Everybody? Chalo, next. Let me talk about something called section 6.3. Residential status of company. Company is set. Simple. At CA inter level, the concept is very simple, but final level, you have too much deep concept in that. But inter level, they gave it in a simple manner. What they told is, company is divided into two types of companies. What is that? Indian company. Other one, foreign company. Indian company is always resident. What is Indian company? Which is incorporated in India as per new act or as per earlier law, 2013 or 1956. So getting clarity? Indian company is always a resident. Foreign company is a resident only if poem is wholly in India. So you have to observe the word. In last concept what we wrote the word control and management is wholly or partly in India. Wholly or partly in India. But यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा? Poem is wholly in India. Any guesses for what is poem? Place of? Last one is management. Correct? All three are perfect. बीच का एक बोल दो वो भी हो जाएगा फिर. हाँ? एंटरप्राइज मैनेजमेंट नहीं यार, थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए आंसर. एकदम मस्त. Some English words for that. Must, proper, equal. Equal को मस्त बोलते equal बोलते क्या यार? Whenever somebody gives speech, we'll say no, it was very excellent or efficient or effective. That's it. That is the answer. Poem starts for place of effective management. So you're getting clarity? That's it. In final level, you have got too much of concept. When do you call that effective management? There is something called active business is done in India. Active business is done outside India. Out of total turnover, what they have done, at least 50% is from India. Like that, different conditions are there. Tests are there. Where we check, कितना percent India में business है, कितना percent activity बाहर है, कितना percent activity India में. Like that, 4-5 tests are there to decide, which is there for you in final syllabus. But inter level, they only want you to know one word, that if poem is wholly in India, resident. Poem is wholly or partly outside India, नॉन-रेजिडेंट. समझ गए सर? बट आपको ये चीज ध्यान रखना है भैया, HUF में हम बोले होली और पार्टली, बट हियर द वर्ड इज होली. पोएम मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. जनरली वी से द प्लेस वेयर की मैनेजरियल decision makings are done. You're getting my point? Everybody? Chalo. If they become resident, then what we see? ROR and? Chalo. How do we classify ROR, RNOR? Additional condition. ऐसा एग्जाम में लिखेंगे ना, भैया बोलेंगे भाई साहब फिर से वापस आ जाना. ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका आपको ऑलरेडी. In individual HUF only there is something called ROR and RNOR. Other than individual HUF, only something called resident and non-resident. I told this to already. Student बोल रहा है सर आपने ड्रॉ किया ना, तो फिर आप आंसर क्यों बोले? So बराबर है. So do we have ROR, RNOR? What do we have? Resident, non-resident. That's it. So clear है? Next वाला भी पढ़ा दूं क्या? फिर दोनों मिलके लिख देते. क्या छोटा छोटा लिखते हैं ऐसा? There is something called section 6.2 and section 6.4. This is for AOP, BOI, AJP, firm, LLP, बाकी सब लोग यार, except, I mean, local authority भी है, except companies
इंडिविजुअल HUF, बिकॉज वो 6-1 में गया, वो 6-2 में गया, और ये 6-6 में गया, 6-3 में गया कंपनी. Corporate companies, you mean to say companies already covered, no, 6-3 में. Sir, this basically talks about every person other than individual HUF company. Simple. समझ गए? सब speak out. Answer says, if control and management is wholly or partly in India, resident. Control and management is wholly outside India, non-resident. हो गया. क्या है आंसर? सेम लाइक HUF. हो गया ना यार आंसर. उसके लिए मैं बोला था सर इंडिविजुअल हम लोग 3 दिन पढ़े इंडिविजुअल के लिए. ये देखो 1 दिन भी नहीं, आधा दिन भी नहीं, आधे घंटे में हो गया पूरा का पूरा बाकी सब. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू इंडिविजुअल इज टेकिंग सो मच टाइम, बट रेस्ट ऑल थिंग्स विल फिनिश ऑफ इन 10-15 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है सर? और एग्जाम में 99% पॉसिबिलिटी इंडिविजुअली आएगा ऑब्वियसली. देखो वही तो मजा है ना यार, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, टाइम पास है. सर क्लियर? चलो लेट्स राइट दिस 2 points and close. Put side heading section 6.2 and 6.4. Six two and 6.4. लिखो बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस of firm, LLP, AOP, BOI, AJP, etc. Resident status of firm, LLP, AOP, BOI, AJP, etc. अच्छा क्लियर है? लिखो नीचे लिखो प्लीज. सेक्शन नंबर लिखे क्या? 6.2 and 6.4 right below. If the control and management is the control and management is wholly or partly in India, the control and management is wholly or partly in India, then they are regarded as resident. Then they are regarded as what, sir? Resident, full stop. However, if the control and management is what, sir? Wholly outside India. If the control and management is wholly outside India, then they are regarded as what, sir? Non-resident. They are regarded as non-resident. Is that clear? Okay, that's it. How are you looking? Next, put side heading.
residential status of company. Residential status of what, sir? Company. Section number, बोलो बेटा सेक्शन नंबर क्या है? 6(3). गुड. Residential status of company, section 6(3). क्लियर बेटा? नीचे लिखो. Indian company shall always be regarded as a resident. Indian company shall always be regarded as resident. Indian company shall always be regarded as resident. Shall always be regarded as resident, irrespective of Indian company shall always be regarded as resident, irrespective of place of effective management. Irrespective of place of effective management. Irrespective of place of effective management. Clear, my dear friends? Next point. Foreign company shall be regarded as resident. Foreign company shall be regarded as resident. Foreign company shall be regarded as resident only if foreign company shall be regarded as a resident only if place of effective management, only if place of effective management, only if place of effective management is wholly in India. Only if place of effective management is wholly in India. बेटा क्लियर है सबको ये बात? Place of effective management is what in India? Wholly in India. Are we clear with this point, everybody? Pakka, my dear friends? Good, fantastic. Write one note no below. Place of effective management generally means, place of effective management generally means place of effective management, poem लिखे. Place of effective management generally means the place where key, KEY, the place where key managerial decisions, the place where key managerial decisions, the place where key managerial decisions are taken. The place where key managerial decisions are taken. तो जहाँ पे हम जो important decisions लेते हैं वही place है place of effective management. In your level that is the answer. Final will receive something अलग level का answer देखेंगे थोड़ा detail में. So clear है? That's it. So getting clarity on this point, everybody, all of us. And if Shiva Teja is a resident, does it mean Shiva Teja's wife also is a resident? If my wife is ROR, will I be ROR? It's different for every individual. Correct, my dear friends? Now I'll ask you one question. Think properly and tell. Shiva Teja, we concluded that I am ROR. Okay? And I've got business income. For business income, we will give treatment as if I am ROR only, no? Speak out. What treatment you will give for rental income? As if I am ROR only. Correct, no? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए आप? There is something called section 6(5) which says if any person is treated as ROR, RNOR, RNR for a particular source of income, he will be given same status for other source of income also during that previous year. करेक्ट है ना सर? ऐसा नहीं है कि पीजीबीपी के लिए ROR है, अदर सोर्सेस के लिए RNOR है, और ऐसे थोड़ी होता है यार.
Your status is based on how many days you have stayed in India. No, once you are ROR, you are ROR for all types of income. So speak out. Chalo, put side heading section 6.5. Put side heading section 6.5. Once the residential status is ascertained, once the residential status, क्या बेटा? Once the residential status, once the residential status is ascertained, once the residential status is ascertained for a particular source of income, once the residential status is ascertained for a particular source of income, for a particular source of income, then the same status will apply. Then the same status will apply. Then the same status will apply. Then the same status will apply for all other source of income. Same status will apply for all other source of income. Yes, beta, clear hai? Sir, bolo. One note. Let's write one note. Residential status is to be determined. Residential status is to be determined residential status is to be determined for each previous year separately. Residential status is to be determined for each previous year, what sir? Separately. दोस्तों clear है? For each previous year separately. Full stop. Next note. Residential status of one spouse residential status of one spouse. So spouse का मतलब wife or husband, बराबर ना? Residential status of one spouse will not have effect on residential status of one spouse will not have effect on other spouse. Correct, no? Bhaiya, it is not other spouse. It is other spouse. अपना ही पार्टनर की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं. सर क्लियर? एवरीबडी बेटा बोलो. हो गया सर. With this we have closed the concept of residential status. But we have still yet to cover the concept of something called deemed to be received in India, deemed to occur in India. वो concept pending है, पता है ना? That also we'll do very soon. Are we clear? Now, open your material. Let's discuss some questions. चलो. Page number? $35. Question number 1. देखो बेटा, an individual. So what is the question? Sir, are you seeing that? Yes, my dear friends, tell me. An individual who is what, sir? An Indian resident is allowed to hold two different citizenships simultaneously. Is citizenship a factor for determining residence status of individual? Citizenship is absolutely irrelevant. Residence status of individual is based on duration of stay in India.
Correct, my dear friends? Let's write the answer. Come on. Come on. First question. Let's write the answer. 35 बेटा 35. 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है ना? चालू करें. Shall I start? चलो. For the purpose of determination of for the purpose of determination of for the purpose of determination of residential status of an individual for the purpose of determination of residential status of individual for the purpose of determination of residential status of individual, comma, citizenship is irrelevant. Citizenship is irrelevant. Citizenship is irrelevant. Full stop. Continue. Residential status is determined residential status is determined based on residential status is determined based on duration of stay in India. Based on duration of stay in India, and it is decided based on conditions given under section conditions given under section 6(1) and section क्या बेटा 6(6). दोस्तों क्लियर है एवरीबॉडी? चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी आंसर के साथ है आपके पास, देखेंगे हम. सर देखो सीधा क्वेश्चन. ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट, विजिट्स इंडिया फॉर एवरी 100 days. ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 10 years. मैं आपको डिस्कस करते हुए क्या बोला था, डेविड वार्नर बोला था. क्वेश्चन तो यही पूछा था मैं आपसे, क्या है स्टेटस बेटा इसका? ये पक्का बनेगा RNOR. डिस्कस करें? No, already we discussed that, no? Would your answer change if the facts, this is interesting, if the facts relate to what, sir? Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents Australian cricket team. That means what? He is an Indian citizen who is coming to India. Sir, question dekho yaar, please. He is an Indian citizen who is coming to India for a visit during previous year. Correct, no? Satisfy क्या करना पड़ेगा उसको? 182 करना पड़ेगा. यहाँ पे कितना डेज है यार? 100 days है. So did he even satisfy 120 days at least? What will become? Non-resident. सब बराबर है? अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार आप. Please speak out. Sir, first case I told RNOR only because special cases will not come into picture. He is not Indian citizen. And I already told you that unless question says, don't ever assume one fellow is an Indian citizen. ये बात बोला था आपको मैं. Unless question says, don't assume he is an Indian citizen. Second bit, what they told, what will be your answer if the facts are related to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and representing Australian cricket team. That means what? He is an Indian citizen who is coming to India for a visit during previous year. Is it covered in special case? Bolo. When will he become resident? If he is in India for 182 days or more. And 120 story will come only when total income is more than 15 lakhs. वो सब बोले क्या अपने को? 120 days है क्या at least?
ठीक है 120 15 लाख को छोड़ दो, सबसे पहले वो 120 डेज है क्या, तो 15 लाख का कहानी भी क्यों आएगा, वो क्या बनेगा भाई साहब, नॉन रेजिडेंट। बेटा समझ रहे आप लोग, बोलो बेटा प्लीज। yesterday we discussed lot of examples, I hope we are clear with this point. चलो नेक्स्ट लाइन देखो, what would be your answer if Srinath had visited for 120 days instead of 100 days every year? Like this they gave no answer, you should not directly tell non-resident. We'll write if the total income is more than 15 lakh other than foreign sources, he'll become RN OR. ROR तो बन नहीं सकता ना, वो RN OR ही बनेगा ना, he'll become RN OR. However, if the total income does not exceed 15 lakh, he'll become non-resident. अच्छा क्लियर है, ये लास्ट बिट का आंसर देखना है आपको, पेज टर्न करो, नेक्स्ट पेज, आपको मिल जाएगा लास्ट बिट का आंसर। फर्स्ट बिट का आंसर तो वैसे RN OR ही है ना सर। नेक्स्ट पेज दिख रहा है बी बिट, नेक्स्ट पेज सी बिट, सी बिट, पेज 36 सी बिट। बेटा बोलो बेटा, बी बिट का आंसर क्या है सर, ए बिट का आंसर है नॉट ऑनरी रेजिडेंट, बी बिट का आंसर है नॉन रेजिडेंट। सब बराबर है सर, समझ में आ रहा है बेटा, बोलो ना बेटा, पक्का क्लियर है। चलो सी बिट का आंसर क्या है, इफ इट एक्सीड्स 15 लाख he'll become RN OR. Correct my dear friends. And if does not exceed 15 lakh he'll become non-resident. पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, सॉल्व कराऊंगा ना एक। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में लिखाऊंगा आपको, आंसर एग्जाम में कैसा प्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर है सर, वी हैव टू प्रेजेंट प्रॉपरली, इफ नॉट वी डोंट गेट मार्क्स। करेक्ट नो सर, लॉजिक सिंपल है सर, आपको पता है मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट आता है, आईसीए को कैसे पता आपको कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैसेज तो नहीं कर सकते आप, फोन पे तो बोल नहीं सकते, एक ही ऑप्शन क्या बचा, तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। व्हेनेवर क्वेश्चन सेज 120 डेज वी विल राइट असम्पशन, अगर 15 लाख के ऊपर है तो RN OR, नहीं है तो क्या बनेगा, एक्सक्यूज मी, सर क्लियर एवरीबॉडी। थर्ड क्वेश्चन 5 minutes टाइम, सॉल्व इट। आंसर नहीं है बेटा, हर क्वेश्चन का आंसर थोड़े देंगे हम, स्टूडेंट पेपर टर्न कर रहे हैं, नहीं है आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आंसर इसलिए दिया आपको, इंटरप्रिटेशन इजी होता है आपको, समझ गए आप। सेकंड क्वेश्चन आई प्रिंटेड द आंसर ओनली बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए अपने को। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन आंसर बोलो। थिंक बिफोर यू रिएक्ट टू मी। आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं, वो डिसाइड करो पहले। यस बेटा, हाँ ROR, ROR NR, यस मैडम लोग सब शांत हो गए। दोस्त क्या है आंसर आपका, RN OR, गुड, वेट कर रहा कोई ना कोई, तो वो भी बोलेंगे। इधर RN OR, तीन ही ऑप्शन आपके पास, फोर्थ जो निकाला मत कुछ अभी।
एनआर, एनआर, सब ग्रुप एक साथ एनआर। मैडम तो आप सब बोलो सर, लास्ट में मैं बोलती। आर एन ओ आर, एनआर, एनआर। आंसर इज आर। Answer is ROR. First basic question I'll ask you. Will special case apply? Huh? Wonderful. That clarity should come first. First that clarity should come that special case will not apply. By correct no? ये फॉरेन सिटीजन है, एक बार अगर अंदर बंदा फॉरेन सिटीजन है और इंडियन ऑरिजिन का बंदा है नहीं तो स्पेशल केस तो आएगा नहीं। तो या तो 182 वाला ऑप्शन है, 63 वाला ऑप्शन है। ये 63 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो रेसिडेंट तो बन ही गया। अरे बोलो यार, तो आप नॉन रेसिडेंट क्यों बोले बेटा? आप क्या सोच के नॉन रेसिडेंट बोले? मैडम आप क्या सोच के नॉन रेसिडेंट बोले थे? फॉरेन नेशनल मीन्स फॉरेन सिटीजन। आप क्या सोच के बोले थे नॉन रेसिडेंट? तब ऐसे ही लगा सर। तो कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। क्या स्पेशल केस आता समझ गए आप क्यों? सर आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, एवरीबडी, नॉट जस्ट हर, एवरीबडी आई एम टेलिंग, टेल योर ब्रेन वेरी क्लियरली, special case story will come into picture only for Indian citizen. First to do special case is only for Indian citizen. Third special case, Indian citizen or a person of Indian origin. And question must tell you, control Shiva, control. Question must tell you that he is an Indian citizen. If question does not tell you, don't assume. और क्वेश्चन तो इतना प्यारा है यार, एक्स देखो, एक्स कितना प्यारा है, जाने के बाद तो प्यारे ही लगते, देखो कितना कंट्रोल शिवा, एक्स कितना प्यारा है यार, सीधा बोल चुका है ना, फॉरेन सिटीजन हूं मैं, इंडियन ऑरिजिन का बंदा भी नहीं हूं, सब कुछ बोला ना उसने, तो रेसिडेंट तो बन ही गया ना यार। थोड़े लोग बोले आर एन ओ आर, वो कैसा बोले मेरे को समझ में नहीं आया। अरे कैसा अज्यूम करता है यार, यहाँ पे तेरे पास 350 दिख रहा है, 366 दिख रहा है, इधर ही हो गया ना तेरा 730, अज्यूम कैसा करता नहीं हुआ, 730 डेज और मोर तो इधर ही हो गया ना यार। सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई हो गया। फर्स्ट वाला क्या है, रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10। बोलो अगर एक बार जब 350 डेज इधर है तो ये साल में रेजिडेंट बनेगा, और इधर अगर 366 है तो उधर भी रेजिडेंट बनेगा, 10 साल में 2 साल तो हो ही गए ना यार इधर। स्टूडेंट पूछ रहा है सर पिछले 8 साल का स्टोरी नहीं दिया उन्होंने, तेरे को क्या करना है रे, हो गया ना तेरे को आंसर, समझ गए आप? ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं नाम चेंज कर दिया बस, और बच्चा लिख दिया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, देन आई से विल टेल इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट। समझ गए आप? डू यू वांट बैलेंस 8 year story for you? They already gave 2-3 year story, no? With that 2-3 year story, is it sufficient for you to answer? Then why do you want the balance story for you? Correct, no? Getting my point? दोस्त आप आर एन और क्यों बोले? अरे दिख रहा है ना यार 730 सीधा सामने, टोटल किया ही नहीं, और 350 350 700 तो उधर ही हो गया ना यार, और 15 है 16 है, 731 हो गया उधर, तो अज्यूम कर लिया 730 क्रॉस हो ही नहीं सकते, 350 कैसा होता? दोस्त आपने आर एन और क्यों बोला दोस्त? दोस्त कैलकुलेट किया ही नहीं। अरे यार मैं क्वेश्चन अभी भी दे रहा हूँ ना यार, व्हेन आई गिव यू 2 minutes टाइम फॉर यू टू सॉल्व इट, थिंक प्रॉपरली, थिंक, दिमाग में पहले पूछो स्पेशल केस आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो स्पेशल केस चेक कर लो, नहीं आएगा तो बेसिक कंडीशन चेक कर लो, उसके बाद चेक करो एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कैलकुलेट कर लो, फिर मेरे को आंसर बोलो। आर वी क्लियर? और कल 2-3-4 एग्जाम्पल लिखे भी थे हम लोग, बहुत डिस्कस भी करे थे बहुत यार कल। क्लियर है? पक्का? कैन आई प्रोसीड? चलो आंसर लिखते हैं इसका, पूरा डिटेल में लिखते हैं आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन। As per section 6(1),
मैडम आप अभी भी क्वेश्चन पढ़ने में ही है क्या? आंसर क्या है आपका? NROR ROR ही है, पहले से है या अभी से है? अच्छा ठीक है, आप जल्दी करना आंसर, लेट कर रहे हैं आप, यू बिकम क्विक. ठीक है, गुड. कुछ नहीं, चलो क्या लिखे आप लोग? एज पर सेक्शन 6(1), कमा, an individual shall be regarded as resident. An individual shall be regarded as resident. An individual shall be regarded as resident. An individual shall be regarded as resident only if an individual shall be regarded as resident only if control and management, sorry, see, an individual shall be regarded as resident only if he satisfies, so sorry, उधर ही रहेगा control and management में. Yeah, as per section 6(1), an individual shall be regarded as resident only if he satisfies any of the basic condition. Any of the basic condition. Number 1, पूरा लिखाऊंगा मैं, नो डाउट, एक दो क्वेश्चन पूरा लिखाऊंगा, उसके बाद हम सिर्फ सेक्शन नंबर लिख के छोड़ देंगे, मतलब क्लास में. एग्जाम में तो पूरा ज्ञानबाजी पूरा देने का सब कुछ. 4 to 6 मार्क्स आता है सर, 4 मार्क्स ये थर्ड क्वेश्चन, ऐसा 4 मार्क्स को आता है. तो 4 मार्क्स में व्हाट द एक्सपेक्ट इज, एक 2 मार्क तो आपका कॉन्सेप्ट को दे देंगे, मतलब आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 6(1) लिखो, फिर 6(6) लिखो, नीचे लिखो इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन स्पेशल केस विल नॉट अप्लाई सिंस ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन. करेक्ट. नेक्स्ट लाइन विल राइट in the given case he satisfies second basic condition and both the additional condition. एक मार्क हो गया. Final conclusion. Hence the resident status of Mr. X shall be ROR. और एक मार्क हो गया. 4 मार्क ऐसा डिवाइड करते. They give stepwise marking, you know that, no? In that 4 marks they give 2 marks to your concept, 1 mark for your interpretation, 1 mark for your conclusion. Clear? चलो बेटा क्या लिखे हम? तो हम एक दो क्वेश्चन हम क्लास में जो सॉल्व करेंगे ना, पूरा सेक्शन लिखते हैं, उसके बाद सेक्शन नंबर लिख के छोड़ देंगे. As per section 6(1), an individual should be regarded as resident only if he satisfies any of the basic condition. Number 1, he must be in India. He must be in India for a period of. He must be in India for a period of. क्या बेटा? 182 days or more. 182 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or second वाला लिखना बेटा. He must be in India. He must be in India for a period of. He must be in India for a period of 60 days or more. He must be in India for a period of 60 days or more. 60 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and क्या बेटा? 365 days or more and 365 days or more during 4 years. During 4 years come preceding the previous year. During 4 years preceding the previous year. That's it. Clear beta? Everybody? Next line. Next line you write. Further, comma, a resident individual shall be regarded as ordinarily resident
shall be regarded as ordinarily resident if he satisfies both the additional conditions given under section, which section beta? 6. Yes, you can use u by 6, u by s. वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बेटा. यूजिंग राइट इन दैट u by s clearly means under section. ये कोई शॉर्टकट नहीं है. दैट इज हाउ लीगली दे यूज. चलो क्या बोले आप? अंडर सेक्शन 6 लिखो नीचे. नंबर 1 क्या है बेटा? ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया. He must be resident in India. He must be resident in India in at least. He must be resident in India in at least 2 out of. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years. 10 previous years preceding the previous year. वो लिखने वाले हम लोग. He must be in India he must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years. 10 previous years preceding the previous year. बराबर ना? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of. He must be in India for a period of क्या बेटा? 730 days or more. He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years. He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. During 7 years preceding the previous year. That's it. Next paragraph. In the given case, X is not an Indian citizen. In the given case, X is not an Indian citizen and X is not a person of Indian origin. In the given case, X is not an Indian citizen. In the given case, X is not an Indian citizen and X is not a person of Indian origin. Full stop. Accordingly, special cases or exceptions. Special cases or exceptions. Correct? No, exception is special case only, no? Accordingly, special cases or exceptions do not apply. Do not apply. Full stop. Continue. Mr. X satisfies. Mr. X satisfies. Mr. X, what sir? Satisfies the second basic condition. It satisfies second basic condition and also satisfies second basic condition and also both additional conditions together. Correct, hai na? And also satisfies both additional conditions together. He satisfies second basic condition and also both additional conditions together. Next paragraph. Hence,
hence, comma, the residential status of X hence, the residential status of X shall be regarded as residential status of X shall be regarded as, बोलो क्या बेटा, resident and ordinary, ordinarily, good, please, ordinary मत लिखो यार, कभी मत लिखो ordinary, because meaning ही बदल जाएगा. Ordinary, see, it's not spelling mistake, it is a concept mistake, because ordinarily मतलब generally, usually उसका meaning वो है. आप ऑर्डिनरी करेंगे तो मीनिंग ही बदल गया ना. स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो मीनिंग ही गया. जिस आदमी के पास वो मीनिंग नहीं है ना, वो ही लिखेगा ऑर्डिनरी. जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि वो ऑर्डिनरीली, यूजुअली, जनरली रेजिडेंट है, वो पक्का लिखेगा ऑर्डिनरीली. माय प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक, प्रॉब्लम इज अबाउट कॉन्सेप्ट मिस्टेक. सर क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? कैन यू प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन? एक सेकेंड, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास. Sir, ready? Sir, I'll dictate one question, please write. I'll dictate one question, please write and tell me the answer. X is an Indian citizen. You might ask, sir, हर बार इतना X क्यों यूज करते हैं, आप कुछ और यूज कर सकते ना. The reason is very simple, किसका नाम यूज करे तो unnecessarily will become short of names. X is very easy to remember, and the mathematics, the biggest problem is always about, I'm sure in your foundation that is what is the whole effort what you have taken. Ultimately your effort, your faculty effort, professor effort was only to find out X, not who's X, X. Correct? No? Chalo, लिखो बेटा, क्या लिखे हम? X is an Indian citizen who is working with, X is an Indian citizen who is working with a company located in X, an Indian citizen who is working with a company located in tax-free zone of African country. Who is working in a company located in tax-free zone of what, sir? African country. Sir, clear है question? Full stop. His stay in India is as under. His stay in India is as under. Clear? Previous year 22-23. 22-23, 30 days. 22-23, 30 days. 21-22, sorry, 22-23, 30 days. 21-22, 200 days. 20-21, 300 days. 20-21, how many days, sir? 300 days. 19-20, 150 days. नीचे लिखो, प्रायर टू दैट 0. प्रायर टू दैट क्या बेटा? 0. सर आप डेज क्या क्या लिखे बोलो ना एक बार मुझे. 30, 200, 300, 150, प्रायर टू दैट 0. बराबर ना यार बेटा? बोलो. हाँ नीचे लिखो, नीचे लिखो. फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, for the previous year 22-23, comma, income of X, income of X, bracket, other than foreign sources. In the previous year, income of X, bracket,
other than what, sir? Foreign sources is 18 lakhs, 18. Income of X other than foreign sources is how much, sir? 18 lakhs, 18 lakhs. Full stop. Continue. For the previous year, 22-23, for the previous year 22-23, comma, he is not taxable in any other country. Below my question is, determine residential status. Think and tell me. Don't jump to conclusions. Think. हो गया? Answer is done. What is the answer? बोलो बेटा. Huh? Deemed resident. Wonderful. That is the answer. Whatever data I gave about 30 days, 200 days, 150 days, वो पूरा का पूरा बिस्किट. तो बिस्किट मतलब समझ गए ना आप लोग? मतलब कोई काम का नहीं है वो. कोई काम का नहीं है. ये भाई साहब इंडियन सिटीजन है क्या? है. टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर है क्या? है. इज लाइबल टू टैक्स इन अनदर कंट्री? नो. व्हाट इज द स्टेटस देन? Deemed resident, who is technically called RNOR. He will not become ROR. Correct, my dear friends? You might tell, sir, आप conditions देखना ना सर, 182 days, 60 days. अरे भैया वो है 30 दिन. 30 days में वो क्या satisfy करेगा बेसिक कंडीशन? सर अगर बेसिक कंडीशन satisfy कर रहा तो अलग बात है. हम जाएंगे ROR और NOR वो सब कहा नहीं आता. बट ये भाई साहब बेसिक कंडीशन ही गया. जब बेसिक कंडीशन गया तो भाई साहब क्या बनेंगे? नॉन रेजिडेंट. बट बिकॉज ऑफ डीमड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट ही बिकेम ए डीमड रेजिडेंट. समझ रहे? कैसा बोला आप? एनआर भूल गए? 61A. तो बेसिकली अप्लाई करके नॉन रेजिडेंट बन गया ना, तो दिमाग में ये भी आना चाहिए ना. मैं जब बोला अफ्रीकन टैक्स फ्री कंट्री, एक बार ऐसा वर्ड सुनते टैक्स फ्री कंट्री, हेलो 61A, आई नो, ब्रेन बोलना चाहिए सर. आरएनओआर एनआर नहीं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा तीनों है अंदर. वो तीनों में से एक भी एक्टिवेट करेंगे ना, आंसर आ जाएगा. सुने बचपन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिडुला ऑब्लांगेटा तीनों में से एक तो भी थोड़ा प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आंसर आ जाता है सर. तो एनआर पे क्यों रुक गया? सुना ना वो टैक्स फ्री अफ्रीकन कंट्री, और मैं जानबूझ के ये भी लिखाया दैट ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री. आई इंटेंशनली गिव दैट लाइन सो दैट योर ब्रेन विल टेल हाय दिमाग की बत्ती. हाँ मेंटोस, हर बार मेंटोस करने की जरूरत नहीं है यार. हाँ, ही इज नॉट लाइबल टू एनी अदर कंट्री, उधर ही आंसर हो गया. एंड आई वाज सरप्राइज्ड. क्या दोस्त? आई मीन देते क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करते. जब वो बोले टैक्स फ्री अफ्रीकन कंट्री, वो भी बोलना चाहिए ना कि कोई कंट्री में टैक्सेबल नहीं है. डेफिनेटली दिल गिव. इफ नॉट assumptions लिखना पड़ेगा. इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन अनदर कंट्री विल बिकम डीमड रेजिडेंट. इफ इज लाइबल टू टैक्स इन अनदर कंट्री देन ही विल नॉट बी ए डीमड रेजिडेंट. हम भी दोनों केस बता देते. करेक्ट ना यार? सर दोनों ऑप्शन हम ही देंगे ना यार. अभी रिस्पॉन्स नहीं है तो सामने वाले का क्या करेंगे? दोनों ऑप्शन हम ही देंगे. सर yes or no? And I was shocked to see 3-4 friends picked up calculator. 30 days, 300 days, oh 730 days. Wow.
भैया 7:30 वो सब कहानी कब आता है भैया? एक बार अगर रेजिडेंट बना तभी तो आर एन आर की कहानी आएगा ना सर। क्लियर है? मजा आया क्वेश्चन? ये कल कोई देखा था दूसरे बुक में किधर तो मुझे अच्छा लगा तो फोटो लेके रख दिया था बस, इसलिए मैं सोचा आपको क्वेश्चन दूं आज। लिखेंगे आंसर? राइट डाउन, राइट बिलो आंसर। In the given case, in the given case, comma, X is in India. X is in India. For what? X is in India for 30 days. 30 है क्या बोलो? 30 days. 30 days. And X is in India for 30 days and cannot satisfy any of the basic condition given under section 6. क्या बेटा? 1. गुड। अरे 6.1 की बात करेंगे ना, पहले बोलो प्रेसिडेंट है ही नहीं, उसके बाद हम 6.1 को लेके आते। करेक्ट ना? अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। हावेवर, समझ गए? हावेवर, कमा, provisions of section 6 bracket 1a shall apply. करेक्ट नो? 6.1a shall apply. एंड क्वेश्चन में बताते सर वो लोग कि वो टैक्स फ्री कंट्री में नॉट लायबल टू टैक्स है, वो सब बताएंगे, वरना अपने क्या पता चलता है, तो अपने को असम्पशंस लेकर लिखना पड़ेगा फिर। क्या लिखे आप ये? However, provision of section 6.1a shall apply and X shall be regarded as, wait, I'm so sorry, X shall be deemed to be, regarded मत लिखो प्लीज, X shall be deemed to be, correct no? X shall be deemed to be resident but not ordinarily resident. X shall be deemed to be resident but not ordinarily resident since he satisfies all the three conditions. So बराबर है? Since he satisfies all the three conditions given under section 6 bracket 1a. Very good. Given under section 6 1a. नीचे लिखो बेटा number 1. X is an Indian citizen. Correct no? Number 1, X is an Indian citizen. Number 2, his total income bracket other than foreign sources, बराबर ना? His total income bracket other than foreign sources, bracket close, exceeds कितना बेटा? 15 lakh during the previous year. PY exceed 15 lakh during the previous year. Number 3, X is not liable to tax in any other country. Generally they say he is not liable to tax in any country because of domicile or because of residence and all. Domicile matlab he is staying in that country. Since he is staying in that country domestically, that is called domicile. They say domicile. Since he is staying there, he is given that exemption. Correct, no? So getting my point? So let me give a small example, sir. Here in Pune, if you buy a car, you have to pay something called local body tax. Correct, no? But if it's the same car, if you buy in a nearby village or nearby town, there you get registration done. There is no LBT. Do you know this? A lot of people who buy car in Pune, they go out of Pune and get the registration done. Because LBT makes a difference. Correct, no? In Hyderabad also we have the same concept. जो भी है अभी नाम मत छोड़ो यार.
नहीं जो भी है बहुत लोग ऐसा करते हैं यार. I mean Hyderabad also, I mean my car I got registered in my village. My hometown I got registration done. The reason because I wanted some specific number for which price is different, and the tax which is levied in Hyderabad is different, in that nearby town is different. In my village only I got registration done. सब है मतलब एक फ़ोन करेंगे तो काम हो जाएगा वहाँ पे. अरे बराबर ना यार, अपनी जगह है, कॉन्टैक्ट रहते नहीं यार. सब क्लियर है, समझ गए आप लोग, एवरीबडी. So it's not liable for that reason of that domicile and all. Are we clear? Can I proceed? Done. Next question. लिखो. ये क्वेश्चन जो बराबर बोलेगा सर उसको मैं कल चॉकलेट दूंगा सर. क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखो. नहीं, फोर्थ वाला तो आप बोलेंगे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस से फोर्थ वाला बताएंगे आप. नहीं, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो. X is an Indian citizen X is an Indian citizen who is working with a company, who is working with a multinational company. X is an Indian citizen who is working with a multinational company. X is an Indian citizen who is working with a multinational company. Who is working with a multinational company and posted मतलब job, बराबर ना, and posted in Nigeria. Did I say tax free zone and all? Speak out. क्वेश्चन बताएगा आपको टैक्स फ्री है नहीं है. आपको याद रखना चाहिए, जरूरत नहीं है कि क्या क्या कंट्री टैक्स फ्री है, वो काम नहीं है कि आपको कुछ. अरे मुझे खुद को भी नहीं मालूम कितने कंट्री टैक्स फ्री. 7-8 places I can tell, but not all the places, no. समझ रहे आप? Full stop. Continue. During previous year 22-23, during previous year 22-23, during previous year 22-23, come on, he comes to India. He comes to India for a visit of 122 days. For a visit of what, sir? 122 days. Full stop. In earlier 4 years, in earlier 4 years, comma, he is in India. In earlier 4 years, comma, he is in India. In earlier 4 years, comma, he is in India for more than 1000 days. ठीक है? Full stop. Continue. Determine residential status. Determine residential status assuming his income for previous year 22-23, assuming his income for previous year 22-23 is as under. His income for previous year 22-23 is what, sir? As under. नीचे लिखो, some story लिखेंगे अभी. Particulars, amount, 2 columns ले लो. Take 2 columns, particulars and amounts. ठीक है? First point. Income from salary. Income from salary, comma, consultancy. Income from salary, comma, what, sir? Consultancy. Earned
EARNED, earned and received. Earned and received in Nigeria. Earned and received in Nigeria. ठीक है, अमाउंट कॉलम 28 lakhs 28 lakhs. तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग? मैं आपको कितने क्या क्या टैक्सेबल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको इतना ही पूछ रहा हूं कि रजिस्टर्ड स्टेटस क्या है उसका. क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक. कंटिन्यू. इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम व्हाट सर? बिजनेस. ब्रैकेट राइट. ब्रैकेट राइट. Accrued and received. Accrued and received. Accrued and received outside India. Accrued and received outside India, but controlled from Nigeria. Holy. Accrued and received outside India, but controlled from Nigeria. ठीक है बेटा? 22 lakhs. 22 lakhs. लिखे बेटा? हाँ, थर्ड पॉइंट. इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस. थर्ड पॉइंट. राइट माय डियर फ्रेंड्स. थर्ड पॉइंट. Income from another business. Income from what, friends? Another business. Bracket. Accrued and received. Accrued and received outside India. Accrued and received outside India, but controlled from India. Accrued and received outside India. Accrued भी बाहर है, received भी बाहर है, but controlled from India. 7 lakh. Next. Interest on FD in India. Interest on FD in India. Interest on FD in India. ठीक है बेटा? 12 lakhs. 1 2. Next. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. सर इसका कुछ डिडक्शन मिलता है ना? कौन से सेक्शन में? 80C. जिसका लिमिट है 1,50,000. याद है ना सर? हाँ, क्या लिखे बेटा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया. अमाउंट कॉलम 90,000. 90. That's it. Get me perfect answer. What is his residential status? Think properly and then tell me, guys. सोच के सॉल्व करो. ऐसे ही कुछ तो मत बोलो. Think properly and tell me. Don't see my face. I will not give any expression. हाँ सर, मैंने उतना ही पूछा सर. मैं कुछ भी नहीं पूछा आपको. कितना टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है, वो सब मैंने कुछ भी नहीं पूछा. मैं बहुत स्वीट हूँ. मैं सिर्फ इतना ही पूछा आपसे रिटेनर स्टेटस कितना है. बट ये क्वेश्चन के बाद ना फुल क्लैरिटी आता है कि वो क्या है, वो 15 लाख क्या है, क्या नहीं, सब मालूम पड़ता है.
आर एन ओ आर एन आर, लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है। आर और तो नहीं है। एन आर, guys, you apply your concept, whatever concept I taught you, just go through that. How do we calculate that 15 lakh, वो सब देख लो आप, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा कि क्या है आंसर, एन आर ए आर एन ओ आर ए क्या है, बराबर आंसर आपको ही आ जाएगा। आर ओ आर, आर ओ आर, मैडम आपका आंसर आर ओ आर है, ये तो शॉकिंग आंसर है मेरे लिए। मैं कोई भी एंगल से एक्सपेक्ट नहीं किया कि आर ओ आर करके आंसर आएगा। हाउ इज आर ओ आर माय डियर फ्रेंड? एडिशनल इज सैटिस्फाइंग। और एडिशनल सब तो छोड़ो, सबसे पहले बेसिक तो सबकी बात करते हैं। दोस्त बोलो किस किस का आंसर आर एन ओ आर है, किस किस का आंसर एन आर है? गुड, गुड का मतलब ये नहीं कि सही नहीं है, दोनों को मैंने गुड बोला है, किसका आंसर सही है देखते हैं। ठीक है सर, माय फर्स्ट पॉइंट टू यू, टेल मी वेरी क्लियरली, इज इट कवर्ड इन स्पेशल केस? स्पीक आउट। 100% answer is yes. Which special case? The third special case. He is an Indian citizen or a person of Indian origin who is coming to India for a visit during previous year. Correct, my dear friends? Bolo. How many days is there in India during previous year 22-23? Sorry? 122 days. 122 days. मतलब 182 तो है नहीं, 182 तो है नहीं, तो 182 पकड़ के रेजिडेंट तो बन नहीं सकता है। This fellow cannot become resident by using 182 days. Speak out. Then what we have to see? 120 and 365. 120 तो satisfy कर रहा है, 120 satisfy कर रहा है, 365 भी satisfy कर रहा है, बिकॉज पिछले 4 साल में 1000 दिन है वो। मैडम बराबर है? Yes, he will satisfy 120, he will satisfy 365. But the problem here is 120 365 story will come into picture only when total income other than foreign sources is more than 15 lakhs. बराबर है सर? तो अपने को बेसिकली ये चेक करना है कि 15 लाख के ऊपर है या नहीं है इनकम। समझ गए आप मेरा पॉइंट? चलो, पहला इनकम क्या दिया मैंने आपको? सैलरी एंड कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम नाइजीरिया, इट इज अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन, दैट इज फॉरेन इनकम, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड फॉरेन सोर्स, उसको इग्नोर करो। बराबर? हाँ, मैं कितने पॉइंट दिया वैसे? हाँ चलो, सेकंड वाला क्या है? बिजनेस इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम, इग्नोर करो उसको। बराबर है? हाँ चलो नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम, कितना बेटा? दैट वी विल कंसिडर। इफ यू वांट यू चेक, वी डिस्कस वेरी क्लियरली दैट, मैं आपको पढ़ाया था अभी क्लास में भी, ओपन करके मैं आपको दिखाई ये चीज वेरी क्लियरली, मैं आपको बताया था ये बात, दैट टोटल इनकम, I'll tell you which page number also I discussed this point. I discussed this point very much with you. And I told you also, बेटा इसका क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। देखो पेज नंबर ये है, क्या है पेज नंबर इसका? 25। तब ऑब्जर्व नहीं कर तो अभी तो ऑब्जर्व करो कम से कम। हमने डिस्कस किया इनकम विच अक्रूज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट व्हाट? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। एक्सेप्ट वो मतलब वो इंडियन इनकम में ऐड करेंगे ना? एक्सेप्ट वो मतलब, एक्सेप्ट दैट मींस व्हाट? दैट इज नॉट अ फॉरेन सोर्स। इफ दैट इज नॉट अ फॉरेन सोर्स, डू वी ऐड इट
फॉर कैलकुलेट 15 लाख स्टोरी. अरे 15 लाख स्टोरी कैलकुलेट करने के लिए उसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? व्हेन वी से दैट फॉरेन सोर्स में ये कवर होता नहीं है तो मतलब 15 लाख का कैलकुलेशन के लिए ये आएगा ना फिगर? अरे बेटा बोलो बेटा, बराबर है तो कैलकुलेशन में फिगर आएगा. सर आपको मैं समझ गया ना मैं कैसा क्वेश्चन दिया? सर वी ऑब्जर्व केयरफुली फर्स्ट एक दो क्वेश्चन जो डिस्कस करे कुछ भी नहीं था वो सिर्फ इतना ही था कि कंडीशन देख लो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है. और लास्ट क्वेश्चन में जो मैं आपको दिया 15 लाख वाला क्वेश्चन दिया था उससे पहले सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या डिस्कस करें हम? डीमड रेजिडेंट वाला डिस्कस करें. करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या किया अभी थोड़ा लेवल बढ़ा के 15 लाख तो मैं फिगर बोला ही नहीं आपको. मैं बोला भैया तू ही आप ही कैलकुलेट करो, आप ही कैलकुलेट करके बताओ कि 15 लाख हो रहा है नहीं हो रहा है. समझ गए ना? एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है. या तो आपको स्क्वीज करना है तो ऐसा पूछेगा कि आप कैलकुलेट करो. उसको लगता है अरे ठीक है बोल देंगे मैं ही, वो खुद ही बोल देगा 15 लाख के ऊपर ही नहीं है. और उसको लगता है अरे ये सब क्यों, सीधा बेसिक कंडीशन एडिशनल पूछ, स्पेशल केस लाइट ही ले ले. तो नॉर्मल पूछता है जैसे अपना सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन. बियॉन्ड दिस वो कुछ पूछ ही नहीं सकता है बिकॉज बियॉन्ड दिस और कुछ है ही नहीं. समझ गए आप लोग? सर ये कि 7 लाख से कैच पॉइंट है, उसके नेक्स्ट वाला आप कैसे भी बोलेंगे. फोर्थ वाला क्या है बेटा? वो तो एफडी इन इंडिया है, वो तो कैसे भी इंडियन इनकम है. जो भी बंदे सोचे सिर्फ 12 लाख की इनकम है, दोज पीपल थॉट नॉन रेजिडेंट. करेक्ट नो? बट लेट मी टेल यू आंसर इज नॉट नॉन रेजिडेंट, आंसर इज आर एन ओवर बिकॉज इज गोइंग मोर देन 15 लाख. करेक्ट है? अगर आप 7 लाख ऐड नहीं करोगे तो 12 लाख की रहेगा. देन लेस देन 15 लाख, लेस देन 15 lakh will become non-resident. So if you don't know that that is not a foreign source, we have to add in 15 lakh calculation. अगर वो एक concept नहीं पता, resident status chapter you are an expert, master, but वो एक word नहीं पता तो गया. Correct ना यार? Sir, one line, one statement makes a whole difference, man. It makes a whole difference. Clear no? चलो और क्या दिया मैंने? हाँ ये वो तो माइनस करने का है ना बेटा. 19 लाख हो गया अपना जीटीआई बराबर ना. हाँ माइनस एटीसी डिडक्शन बराबर. हाँ ये आ गया मेरा टोटल इनकम 18 लाख 10,000. अब मैं लिखूंगा सिंस माय टोटल इनकम इज 18 लाख 10,000 विच इज मोर देन 15 लाख, he will satisfy all the condition and will become a resident but not ordinarily resident. Condition number 1, he is an Indian citizen or a person of Indian origin. Condition number 2, he has come to India for a visit during previous year. Condition number 3, he has satisfied what his total income other than foreign source is more than 15 lakh. Condition 4, he is in India for a period of 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. 365 का तो आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में खुद बोल दिया मैंने 1000 दिन है बराबर यार. स्पीक आउट. अगर आपका दिमाग स्टार्टिंग में नहीं बोलता स्पेशल केस आएगा ही नहीं, स्पेशल केस क्यों आएगा, खत्म, उधर ही आपका 4 मार्क खत्म. स्पेशल केस दिमाग में आया बट ये 7 लाख का थॉट नहीं आया 15 लाख में ऐड करने के लिए, उधर भी खत्म. 1 पॉइंट इज इनफ टू लूज इट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन perfection and no perfection. Simple. Sir, from childhood I'm a big fan of mathematics. When I finished my 10th standard also, I clearly told my parents that I don't have interest in science. I can't do it. Somehow that physics chemistry I'm not taking into my body. वो मेरे को दिमाग में जा रहे नहीं physics chemistry, I can't do it. Then my parents told, okay, join commerce, don't take maths also. I told, no, I want maths. Then we have a curriculum called MEC, Maths Economic Commerce. So that's where I joined 11th and 12th for MEC. 11th and 12th I have done my Maths Economic Commerce because I love maths like anything. And I joined commerce only because I don't like science. You're getting my point? And in schooling, when I wrote maths exam, I got a score of 19.5. I was the class second topper for mathematics. Only for mathematics. बाकी सब नहीं. स्कूल में I got 73%. मैं तो top 50 में मेरा रैंक 36-37 रैंक है. I was not something like a bright, extraordinary talented student. स्कूल तक ओके थे, उसके बाद पढ़ना चालू करे. उसके बाद मैं रियलाइज किया 11th में दैट आई कैन डू समथिंग. और मैं जब सीपीटी लिख के पास हो गया, दैट वाज फाउंडेशन, दैट टाइम नोन एज सीपीटी, आई रोट दैट एंड आई पास्ड इट. एवरीबॉडी वर शॉक्ड, अरे ये बंदा कैसा पास हो गया. और वो फेस में वो रिएक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा. आई वांटेड टू सी दैट रिएक्शन ऑन एवरीवन्स फेस. देन आई डिसाइडेड आई विल स्टडी. सच में यार, मैं ऐसे ही पढ़ के वैसे ही पढ़ के हो चुका हूँ मैं. आई नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट आई विल बिकम अ सीए. आई केम बाई चांस बट डिसाइडेड आई विल डू इट आफ्टर आई केम. You're getting my point? And let me tell you honestly, when I wrote my maths, why I told this example is because when I wrote maths, I got 19.5. My friend got 100. I went to my teacher, class teacher. We don't call faculty professor. No, school में तो teacher ही बोलते हैं. तो teacher के पास जाके मैंने बोला, सर
क्या सर ये 19.5 दिए, राउंड ऑफ करके 100 दे दो ना सर. हाफ क्या है ये? One line what he told, I'll remember for lifetime. My schooling is done almost way back in 17 years back. 16, 17 years back, I finished my school. But I still remember that one line what he told. And for lifetime, I'll remember. Shiva, if I give you 100, there is no difference between being an expert, not being an expert. Person who got 100 is an expert. You got 19.5, you're not an expert. If I give you 100, there's no difference between him and you. दोनों के बीच में कुछ फर्क है. आपने कुछ गलती किया है, वो कुछ भी गलती नहीं किया है. तो अगर आपको मैं 100 मार्क दिया, there is injustice and infame for that other guy. I cannot do it. 19.5 is 19.5 only. He told like that and sent me. उतना ही बोल के मेरे को भेज दिए क्लास टीचर रूम के पास. All the teachers sit in one room, no. So I went to that room and I asked. Directly that sir told me this statement like this. Expert का बिना expert का फर्क बहुत है. And not expert institute. I'm talking about that being a expert and master in that subject. अगर मैं आपको 100 दूंगा, जो पूरा का पूरा परफेक्ट किया, उसमें आप में फर्क क्या है फिर? बराबर ना सर? उस टाइम उतना मालूम नहीं पड़ा, बट बाद में बहुत रियलाइज किया सर उसका. जब सीए में आया, एक एक मार्क, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, क्या फर्क पड़ता है. आई रियलाइज इट वेरी वेल. इधर ये खुद एग्जाम्पल में देखो आप. स्पेशल केस दिमाग में आया नहीं, क्वेश्चन गया. 7 लाख दिमाग में आया नहीं, क्वेश्चन गया. आर सोचे तो क्वेश्चन गया. कुछ भी इंच का भी फर्क आया तो आंसर खत्म. एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग. यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आपका पूरा स्टोरी बदल जाएगा ना यार. स्टोरी क्यों बदलेगा? बिकॉज आर का टैक्स स्टेटमेंट अलग है, आर टैक्स स्टेटमेंट अलग है, एन टैक्स स्टेटमेंट अलग है. आपका आंसर ही पूरा खत्म. आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी एंड एंजॉयड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट. यस माय डियर. सो I didn't tell he went. I didn't say that he went during previous year, no? Did I say that he went during the previous year for employment? If I say that, then we'll go into that case. Acha, you did not think about 15 lakh. You were stuck that about employment outside India. Acha, nahin. Acha, other part you didn't see at all. You thought other part is all biscuit, first part is only relevant for you. No. I didn't say that he went for employment outside India, no. I told he was posted in Nigeria, but my story, if you observe, what did I say? During previous year, he came to India for a visit of 122 days. When I'm talking about that visit, that means what? In that previous year, he didn't go for employment. In the previous year, he came for a visit. Interpretation. दोस्त, मजा आया क्वेश्चन? या सिर्फ मुझे ही मजा आ रहा है? सबको आ रहा है ना? नहीं, मैं तो इतना उछल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना मजा आया. देखो देखो देखो, थोड़े लोग तो ऐसे देख रहे हैं मुझे. बाद में चेंज हो गया. हाँ बराबर है. कुछ अच्छा क्लियर? कैन आई प्रोसीड? चलो आंसर लिखते हैं इसका. इन द गिवन केस, क्या नाम है इसका? एक्स है ना? हाँ, एक्स इज फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक. एक्स इज अमेजिंग. इन द गिवन केस, come on, X has come to India. Wait. X is an Indian citizen. In the given case, come on, X is an Indian citizen who has come to India. X is an Indian citizen who has come to India. Who has come to India for a. X is an Indian citizen who has come to India for a. क्या बेटा? Visit. X is an Indian citizen who has come to India for a visit during the previous year. Next line. His total income, bracket, other than foreign sources, his total income
other than क्या बेटा foreign sources is 18,10,000. 18,10,000 बेटा ब्रैकेट में लिखो ना ये 7 लाख प्लस 12 लाख माइनस 90,000. ठीक है ना 7 लाख प्लस 12 लाख माइनस 90,000. So clear है speak out. Next line. The residential status of X shall be regarded as resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident, since he is in India for a period of since he is in India for a period of 120 days or more during the previous year. बराबर ना बेटा बोलो. Since he is in India for a period of 120 days or more during the previous year. He is in India for a period of 120 days or more during the previous year. And 365 days or more. 120 days or more during the previous year. And 365 days or more during 4 years. And 365 days or more during 4 years preceding the previous year. That's it. So getting clarity? So अब technically देखने तो यहाँ पे 4 condition है. 1, he is an Indian citizen or a person of Indian origin. Number 2, he is coming to India for a visit during previous year. Number 3, total income other than foreign source is more than 15 lakh. Number 4, he is in India for 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Sir, मजा आया question? सबको clear है? Speak out. Almost some 3-4 examples we discussed yesterday. And today 2-3 questions from book we solved. And 2-3 questions I dictated. Almost 8 to 10 questions we solved. अभी तक perfect हो जाना चाहिए था. Clear है? कर सकते? पक्का? Sure? चलो. Next. अब material देखो आपका. Question number 3 का आंसर. Question number 4 का आंसर बोलो. 3 का तो आपने बोल दिया already. Second, continue. 1-2 questions. बोलो बेटा. 1-2 क्वेश्चन चलेगा ना? हाँ राइट. बोलो बेटा. गुड. सुपर. मजा आया यार. क्वेश्चंस अमेजिंग. सर ये लेवल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो सर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते. अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गया तो बस एग्जाम में जाओ. ये डूबे दिन मेरे. बराबर ना यार. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बहुत तकलीफ होता है यार. उसका तकलीफ अभी मालूम नहीं पड़ता है. जिस दिन एग्जाम लिखते हैं ना यार, जब बराबर आंसर्स नहीं आ रहे, प्रिपरेशन बराबर नहीं हो रहा है, कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे, पेनफुल. इतनी देर सोच रहे हैं आप लोग. अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था. क्या सर? एनआर एनआर
दोस्त क्या है आंसर? बेटा बोलना, वेट करो जरा ही, ऑल आइज ऑन यू. ROR, fantastic. Wrong answer. Answer is NR. अरे यार क्या करना है यार आपको वो सब कहानी से, एक ही चीज देखना है यार. वो आया कब भाई साहब? February 15. कितना दिन है? 43 या 44, जो लिखना है लिखो यार, मतलब जो भी है, मतलब वट एवर इट इज. 14 मतलब 14 डेज इन February प्लस 31, तो 45 होगा ना यार, बराबर ना? When is there for 45 days, can he satisfy any basic condition? बोलो. और स्पेशल केस आएगा क्या पहली बात यहाँ पे? और स्टूडेंट बोल रहा है सर ये तो इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है. कैसा हुआ इंडियन ओरिजिन? बापूजी किधर है? बापूजी सिडनी में है क्या? नहीं, नासिक में है, बट 1950 है. अरे 1950 है ना यार. ही इज नॉट, फादर इज नॉट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. ग्रैंड पेरेंट्स तो अनडिवाइडेड इंडिया हो सकते हैं, बट दे आर बॉर्न इन वेयर? सिडनी. सो दिस फेलो इज नॉट इंडियन सिटीजन, ही इज नॉट इंडियन ऑरिजिन. अगर वो इंडियन सिटीजन है नहीं, इंडियन ऑरिजिन है नहीं, तो स्पेशल केस तो आएगा ही नहीं. क्योंकि क्या है बेसिक कंडीशन? 182 डेज एक ऑप्शन है, दूसरा क्या है 60 एंड 365. एग्जाम अटेम्प्ट कब होता है हम ये देखेंगे हम. वी केम फॉर 190 डेज. वाव, 182 से ऊपर है तो बोल देंगे रेजिडेंट. तो आंसर गया. ये एक्चुअली एग्जाम्पल में दिया था कल आपको. हाउ मेनी डेज ही हैज कम इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी डेज ही हैज कम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज इंपॉर्टेंट. सर कब आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट है. साउंड्स लाइक मूवी डायलॉग, बट फैक्ट तो वही है. करेक्ट ना यार? सिंपल. हाँ तो अरे उसी ईयर किधर हुआ यार? 22-23 देखना है ना, प्रीवियस ईयर. हाँ सब लोग नॉन रेजिडेंट बोल चुके थे, आपके पीछे क्या हुआ आपको नहीं मालूम. सब ऑलरेडी नॉन रेजिडेंट बोल दिया, मैं सबको ओके ओके ऑलरेडी बोल दिया. आप बोले नहीं 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 नहीं, तो हम रुक गए 2 मिनट आपके लिए कि आपका स्पेशल आंसर क्या आएगा सुनने के लिए. मुझे कहीं तो लगा था आप ऐसा कुछ आर एन ओ कुछ तो स्पेशल आंसर देंगे आप. सर क्लियर है? सर ये क्वेश्चन इजी है लास्ट क्वेश्चन से. हाँ ये क्वेश्चन इसलिए इजी लग रहा है बिकॉज लास्ट क्वेश्चन वाज मोर क्रिटिकल. अब और एक और क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा, और इजी लगेगा. सर क्या बोले भैया ने? कुछ नहीं ना? आंसर लिखेंगे क्या? चलो सुना मैंने, सुना. चलो क्वेश्चन नंबर 4. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. सर जब तक आप लोग आंसर्स दे रहे, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आई विल पार्टिसिपेट इन फन विथ यू. ठीक है डन, साथ में मजे करते कॉन्सेप्ट के साथ. चलो क्या लिखे बेटा आप? क्वेश्चन नंबर लिखिए. अच्छा और क्या लिखे? अच्छा ठीक है मैं बोलूंगा अभी. एज पर सेक्शन 6(1), as per section 6(1), as per section 6(1), comma, an individual shall be regarded as a resident. Sir, I'll ask you one question. Sorry to interrupt. Very sorry to interrupt. Very sorry. In this question, should we write additional condition? आंसर में बोलो. जब एक बंदा नॉन रेजिडेंट बनने वाला है तो उसका एडिशनल कंडीशन आंसर में लिखने कोई फायदा ही नहीं है. करेक्ट ना? बेसिक नहीं हो तो एडिशनल क्यों लिखेंगे? लिखो. मैडम बोल रहे हो सब तो नहीं मालूम सर, मैया लिखने की जरूरत नहीं है. हो गया? चलो as per section 6(1), an individual shall be regarded as a resident if he satisfies any of the following basic condition. If he satisfies any of the following basic condition. Sorry. Any of the following basic condition. नीचे लिखो बेटा क्या लिखेंगे कंडीशंस. नंबर 1,
he must be in India for a period of कितना बेटा 182 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or second condition लिख देना. He must be in India for a period of 60 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. बेटा बराबर है, हो गया, आप लिख दिए. नेक्स्ट लाइन, इन द गिवन केस मिस्टर एक्स, मिस्टर हो मिस हो या मिसेस हो जो भी है यार, एक्स, द गिवन केस मिस्टर एक्स does not satisfy any of the basic condition since he is in India only for does not satisfy any of the basic condition since he is in India only for क्या बेटा 45 days during the previous year. He is in India only for 45 days during the previous year. He is in India only for 45 days during the previous year. We'll stop. Next line. Hence, comma, the residential status of X. Hence, the residential status of X shall be. बोलो बेटा क्या बेटा? नॉन रेजिडेंट. दैट्स इट. बच्चों क्लियर है? सब पक्का है? आज कुछ मजा आया? आज वैसे अपन कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ किए नहीं, वो HUF वाला कंपनी वाला डिस्कस करे, वो तो जुजू भी था, कुछ भी नहीं उसमें कॉन्सेप्ट. बट जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा, because the questions what we discussed were actually very amazing, outstanding, because that gives lot of concept on this. Is that clear everybody? चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 6. 5 थोड़ा टाइम लगेगा, वो कल करते हैं, ठीक है? 6 क्वेश्चन लास्ट, 2 मिनट में हो जाए, वो आज सॉल्व करके चले जाएंगे. सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक पॉइंट. इन द फोर्थ क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व, ही इंटेंशनली प्लेड अ गेम विथ यू सेइंग दैट प्रीवियस ईयर हर साल 275 डेज है. वो सब देख के हमारा दिमाग बोलेगा कि यार रेजिडेंट है. That's how they try to play with your mindset. So getting my points? Guys, look at here everybody. All of us once again listen here. समझ में आ रहा है ना how they are going to play with you? See, they'll try to give some points where we try to just get shaken and think that something is wrong. And we end up thinking the answer is wrong. Clear everybody? All of us. Come on everybody, once put your hand on the chin. समझ गए? दिस इज द पावर ऑफ एग्जाम. बोलते हैं चिन्ह बट दिखाते इधर, अपना हाथ जाते हैं इधर, बट चिन्ह है. ओनली स्मॉल डेमो फॉर हाउ दे विल प्ले. ठीक है ना? चलो सॉल्व दिस, लेट्स गो. ये बता दो आंसर फिर जाते. विल क्लोज. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. छोटा सा क्वेश्चन एक्चुअली, सिंपल है. सोच के बोलो बेटा प्लीज.
बोलो बेटा, हो गया? बराबर है? ये रेजिडेंट कैसा बना? पहली बात, सबसे पहले बात, आप सब क्वेश्चन जब पढ़े थे क्या देखे थे सबसे पहले? बोलो। हाँ, फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ऑरिजिन तो है नहीं, तो जब दोनों भी नहीं है तो स्पेशल केस आने का कोई सवाल ही नहीं है. जब स्पेशल केस नहीं आया तो आप सी, वन स्पेशल केस डज नॉट कम, आवर वर्क विल बिकम हाफ. अपना काम आधा हो जाता है. क्यों? देखना है सिर्फ बेसिक कंडीशन. 182 डेज, 60 एंड 365. 180 तो है नहीं, 60 365 तो हो गया ना? अरे बोलो यार, तो रेजिडेंट तो बन गया ना यार. एडिशनल कंडीशंस क्या है? रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10, 730 और मोर इन लास्ट 7 years. अब मैं पहले क्या देखी हमेशा? 730. 730 नहीं हुआ तो पहले वाला देखने की जरूरत भी नहीं है. 730 हुआ क्या? हो गया आंसर. आर एन ओवर, खत्म ना. कुछ भी नहीं है, टाइम पास कुछ नहीं है. क्लियर है? एग्जाम प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे इसका? बेसिक कंडीशन लिखेंगे, फिर एडिशनल कंडीशन लिखेंगे, और फिर आंसर लिखेंगे. इन द गिवन केस एक्स satisfy second basic condition but does not satisfy both additional condition together, hence he will be regarded as Rn or. Clear है? लिखते हैं आंसर, and I'll start answer from second paragraph. समझ गए आप मैं क्या बोला? I will start answer from second paragraph. That means what? Interpretation. फर्स्ट पैराग्राफ क्या करेंगे आप लोग? बेसिक एडिशनल कंडीशन लिखना है आपको एग्जाम में. क्लियर है ना? When I start second paragraph means what will be my starting language? Tell me. In the given case. Perfect. तो उससे पहले एग्जाम में क्या आना चाहिए? प्रोविजन सेक्शन आना चाहिए. ठीक है ना दोस्तों? क्लियर है? 6166 दोनों लिखने का है ऑब्वियसली यार. नो पूरा लिखना है एग्जाम में. अगर 2 मार्क का आता तो लिखो मत पूरा, बट 4 मार्क का आता तो पूरा लिखना पड़ेगा डेफिनेटली. 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट टू राइट. कितने लगता है? आदत हो चुका अपने को, फिर फटाफट जाएगा आंसर. चलो, इन द गिवन केस कमा x satisfies second basic condition x satisfies second basic condition but does not satisfy both additional conditions together. Sir, see the English language, no? How smartly we wrote the answer. Both additional condition together. हमने ये नहीं बोला both additional condition. अगर मैं बोलूंगा both additional condition गलत हो जाएगा. शायद फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करता होगा वो. हमने चेक किया क्या फर्स्ट वाला? हमने चेक क्यों नहीं किया? जब सेकंड ही नहीं हुआ तो फर्स्ट वाला चेक करके टाइम पास क्यों करना है? तो हम जब लैंग्वेज लिखते हैं एग्जाम में तो क्या लिख रहे हैं हम? डज नॉट सैटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन टुगेदर. सो वी आर नॉट कमेंटिंग सेइंग फर्स्ट इज डन, सेकंड इज नॉट डन, सेकंड इज फर्स्ट इज नॉट डन. वी आर टेलिंग व्हाट? दोनों मिलके नहीं हुआ भाई. बराबर ना? एंड डज नॉट सैटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन. दैट्स इट. नेक्स्ट पैराग्राफ. हेंस कमा द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स. हेंस द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स shall be resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. That's it. Beta clear है सबको? Everybody? That's all. Thank you so much. Take care. See you tomorrow. Thanks for your cooperation. Thank you. Normal.